Input devices. Input devices is any hardware device that send data to a computer, allowing you to interact with and control it. इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के ज़रिए जो भी डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है या सेंड किया जाता है वो कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं जो उसको अलाउ करते हैं एंटर करना, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग स्टिक, लाइट पेन, ट्रैक पाल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, microphone, magnetic ink card reader, optical character reader, barcode reader, optical mark reader. कीबोर्ड की फंक्शंस कीज़ हैं F1 display the help screen, F2 change the name of specific file, F3 search function, F4 currently activity close, F5 refresh, और F6 move the mouse pointer to the address bar, F7 use to spell and grammar check, F8 turn on the computer, F9 refresh a Microsoft Word document and send and receive email Outlook, F10 menu bar open, F11 enter and exit the full screen, F12 open the save as dialog box. Shortcut keys: Control Alt Del close an application to turn off your computer, Alt Tab switch between open window, Shift Del delete the item, save, Control S open, Control O new file, Control N, Control C is for copying, Control V is for pasting, Control X is for cutting the content, undo, Control Z select all, Control A italic, Control I, Control B for bold, Control U highlight the word या underline the word, Control right arrow position the mouse pointer at the beginning of the next word, left arrow previous word, down arrow paragraph down, position the mouse pointer at the beginning of the next paragraph, Control up arrow return the mouse pointer to the beginning of the previous paragraph. Pointing devices. An input device used to control a pointer on the screen is called a pointing device. A pointer is a small symbol that appears on the screen in a graphical user interface. पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जो स्क्रीन पे पॉइंटर को या कर्सर को कंट्रोल करती हैं. टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस: माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्टाइलस. Mouse. A mouse is a small, lightweight input device. The mouse is moved on a flat surface to control the movement of the cursor on a screen. A mouse usually has 2 or 3 buttons. These buttons are used to do various tasks. माउस एक स्मॉल लाइटवेट डिवाइस इनपुट डिवाइस है जो कि स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करती है. Trackball. A trackball can also be used as alternative to a mouse. This device also has buttons similar to those on a mouse. It holds a large moving ball on the top. The body of the trackball is not moved. The ball is rolled with finger. The position of the cursor on the screen is controlled by rotating the ball. Trackball भी हमारे पास एज अ माउस की तरह होती है, बट इसका लार्ज सरफेस एरिया जो होता है वो बॉल के लिए होता है. बॉल जिस तरह जितनी ज़्यादा मूव होगी कर्सर भी उतना ही ज़्यादा रोटेट करेगा स्क्रीन पे. मेन बेनिफिट ऑफ द ट्रैक बॉल ओवर अ माउस इज़ डैट इट टेक लेस स्पेस टू मूव. ये स्पेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लेस स्पेस लेता है मूव होने के लिए. द ट्रैक बॉल इज़ ऑफ्टन इंक्लूड अ लैपटॉप, कंप्यूटर. टच पैड.
A touchpad is a small plane surface over which the user moves his finger. The user controls the movement of the cursor on the screen by moving his finger on the touchpad. It also known as a trackpad. टचपैड ऐसा है कि इसके सरफेस पे हम फिंगर को मूव करते हैं, उसी तरह कर्सर भी मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटिंग स्टिक। अ पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। It is similar to a pencil eraser and exists between keys on the keyboard. When the user push the pointing stick, the pointer on the screen also move. पॉइंटिंग स्टिक हमारे पास प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि जिस पे हम पुश करें थोड़ा सा तो वो क्या करेगी, उसके ज़रिए पॉइंटर स्क्रीन पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इट डिमांड्स no extra space or cleaning like a mouse. A pointing stick is normally used with the notebook computers. Graphics tablet. A graphic tablet consists of a flat pad on which the user draws with a special pen called a stylus. The image is created on the screen as the user draws on the pad. A designer can produce very accurate drawing using a graphic tablet. It is also called a digitizer. ये ग्राफिक टैबलेट्स जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो कोई भी ड्राइंग या स्केच को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो स्पेशल पेन यूज होता है वो स्टाइलस होता है। टच स्क्रीन इज़ अ वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम द टच ऑफ अ फिंगर. The screen is covered with a plastic layer. There are undetectable beam of infrared light at the back of the screen. In order to enter data, the user touch icon or menu on the screen. Most touchscreen computers use sensor to detect the touch of a finger. ये टच स्क्रीन वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होती है जो फिंगर के टच करने से कोई भी डाटा को रिसीव करती है और ये कवर्ड होती है प्लास्टिक लेयर के साथ। उस पर जब इंफ्रारेड लाइट या बीम और स्क्रीन पे पड़ती है तो ये डाटा को इंटर करती है विद टच आइकन्स और मेन्यूज। Light pen. A light pen is a hand-held pen-like device. It is a light-sensitive stylus. The light pen is connected by a wire to the computer. It has a device at the tip that emits light. The pen sends information to the computer when a user touches the pen on a certain area of a specially designed screen. A light pen usually used by engineer, graphic designer and illustrators. लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कंप्यूटर से वायर के ज़रिए कनेक्ट होती है और ये क्या करती है, इमिट लाइट करती है जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में एंटर करती है और ये स्पेशली डिज़ाइंड स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होती है और इसको स्पेशली इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर्स यूज़ करते हैं। Joystick consists of a base and a stick. The stick can be moved in several directions to shift an object anywhere on the computer screen. A joystick can perform a similar function to a mouse or trackball. It is often considered less comfortable and efficient. The most common use of a joystick for playing computer games. joystick हमारे पास अवेलेबल होती है एज अ बेस और इसके ऊपर एक स्टिक लगी होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर कंप्यूटर पे स्क्रीन में आइकन्स को शो करने मूव करने के लिए और ये एज अ सेम माउस की तरह अपने फंक्शन को क्रिएट करती है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो कंप्यूटर गेम्स में होता है। A stylus is similar to a ballpoint pen. It uses pressure to write text and draw lines. It was also called a pen. A stylus is used in graphical application. Architecture artists and designers used to create drawing and sketches. स्टाइलस एक प्रेशर पेन होता है जो टेक्स्ट को राइट करने के लिए या लाइंस को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ग्राफिकल एप्लीकेशन या आर्टिस्ट और डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं ड्राइंग अगर करने के आपको ये लिए या वीडियो अच्छी लगी स्केचेस तो चैनल बनाने को के लिए। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।